Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastav, retired zoology professor जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एंड अभी तक तो हम काफ़ी परिचित हो चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन मोर लाइन जस्ट। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया, जिसमें हम पढ़ने पढ़ाने की बातें करते हैं। इनवाइट मोर स्टूडेंट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर ऑल प्रॉब्लम्स. So our today's topic is MSc semester end examinations, questions and answering patterns. इसी टॉपिक पर हम पहले दो क्लास पहले भी कर चुके हैं. दैट दोज वेर फॉर पेपर 1 and paper 2. And again, on request of the students only, we are going to discuss the same topic. That is not same topic, rather same syllabus discussions and answering questions and answering patterns. Paper 3 is involving in this according to their examinations of this university. This paper 3 includes parasitology and animal behavior. So this is again a very quick topic to be discussed. Yesterday only I have got this topic, and they are going to have, the students are going to have their examinations within 1 or 2 days. Probably on 4th of May they are having their examination. So let us discuss in general the marking patterns. We have already discussed previously also. We have seen this is the syllabus they have given. This is the parasitology syllabus, and this is the animal behavior. Unit 1 includes the parasites and parasitism, molecular interaction between host and parasite, then protozoan parasites, helminths parasites, and the unit 2 includes animal behavior, and these are the subtopics under animal behavior. That is the definition, objective, significance, then orientation, biological rhythms, and social behavior. So today we are mainly going to discuss on the short type question answers. That is the marking patterns we have already discussed, like the paper 1 and paper 2. In my opinion, and as much as I remember, the marking is of 100 marks in each and every papers in general pattern. This is for the as this is based upon national level or UGC style. The paper carries, total paper carries 100 marks, out of which 70 marks का semester end examinations हैं और 30 marks का आपका internal assessment as well as mid semester examination हो चुका होगा. So it is 70 plus 30 patterns. That is the general UGC general pattern as per UGC norms. So we are discussing here over the semester end examinations, that is the written examination of 70 marks. The time will be 3 hours, and the time is 3 hours, and the full marks are 70. Now, as discussed earlier, this 4 marks may be divided into as per my view, it must be the division of the 70 marks must be in this way. The question 1 and question 2 must be compulsory. The question 1 carries the MCQs, that is the multiple choice questions. It may be 20 into 1 or it may be 10 into 2 as per the examination setter. जैसा examination setter का जो choice होगा, जैसा उसमें उन्होंने set किया हुआ होगा. क्वेश्चंस 1 नंबर के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं या 10 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं. सो दैट इज द एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको अगर क्वेश्चन that is the most possible chance, choose the correct answer. So you must choose the correct answer and you must write the full answer in your copy, not the choosing style, that is अगर ABCD choice दिया हुआ है या रोमन 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप आंसर में कभी भी 1 2 3 4 या ABC नहीं लिखिए. जो आपका आंसर है, that you write down that answer. अगर आपका OMR क्वेश्चन शीट है या आंसर शीट है जिसमें कि ऑलरेडी प्रिंटेड है क्वेश्चंस और उसमें आपको टिक करना है, तभी आप टिक कर सकती हैं. अगर आप जनरल क्वेश्चन ब्लैंक आंसर बुक में आप आंसर कर रही हैं, तो ऑलवेज
choose the correct answer and write the correct answer in word. This is my advice. Then the क्वेश्चन 2 जिस पर आज हमारा मेन डिस्कशन है, जो हमारी लड़कियां बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं, द शॉर्ट आंसर टाइप. This it also carries 20 marks. That is the short answer type. And again here there are two possibilities. या तो पेपर सेटर आपको 4 क्वेश्चंस कैरी आंसर करने के लिए बोलेंगे, carrying each question carrying 5 marks. That should be must the priority. और ज्यादा होना यही चाहिए कि 4 क्वेश्चन कीजिए, 4 आंसर कीजिए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन. बट कभी कभी अगर एग्जामिनर चाहें तो 5 क्वेश्चंस करवा सकते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन. तो वॉट एवर द पैटर्न इज, मोर और लेस आपको आंसर का लेंथ और स्टाइल एक होगा. दैट इज 20 मार्क्स. एंड देन द लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 15 into 2, 30. So this is the most possible way of marking. So without going much on this topic, क्योंकि ये हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओवरऑल 70 मार्क्स हो गए. 20 + 20 + 30. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मस्ट बी कंपल्सरी, यू हैव टू आंसर. एंड थर्ड क्वेश्चन में कितने आंसर, कितने ऑप्शन है, कितने चॉइस पेपर सेटर आपको देते हैं, ये उनकी मर्जी है. नाउ we are here focusing on the short answer type questions, which should be, in my opinion, these 4 points must be kept into consideration while answering these short answers. Answers must be to the point. 4 या 5 नंबर का है तो 1 या 1.5 पेज से ज्यादा का आंसर एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करने हैं या 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. तो टू द पॉइंट आंसर कीजिए. ट्राई टू आंसर इन टेबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस में डायग्राम्स ज्यादा बनाइए, डायग्राम्स को वेल लेबल रखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ज्यादा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो टेबुलर फॉर्म में आंसर कीजिए. सो दिस इज माय जनरल एडवाइस. नाउ दिस इज द टॉपिक, this is your syllabus. Now we are going on discussing. We have selected some of this as much as possible, the short questions, and I'm together I'm going on giving you certain sites also, जो जिन sites पर मुझे short comprehensive answers मिले हैं. कुछ sites वैसे when I started searching the sites, enormous number of sites were available. Some of the sites like Britannica, Wikipedia, then sciencetoday.com, then jstor.org, sciencedirect.com, lumc.nl.com, ये 4-5, nature.com. These are 4 or 5 sites in which not for the short questions. I haven't got short questions. Short questions I'm giving you just with in my opinion, जो मुझे समझ में आ रहा है. I have gone through your syllabus, the topics of your syllabus. I have gone through these sites, और उनमें मुझे बहुत comprehensive Wikipedia, jstor.org, इन 2 sites पे, और lumc.nl.com पे बहुत comprehensive answers मिले मुझे, like the definitions, like the main ideas of the topic. So you can select, you can consult these sites for your short answers. Now let us see syllabus wise. मैं discuss कर रही हूँ short questions. First is the parasitology and animal behavior. The most expected or the always expected questions may be what is the parasite, what is parasitism, what are parasites. तो अलग अलग parasite और parasitism 5 नंबर के, in my opinion it is not much expected. Parasite and parasitism together you can expect always. Then types of parasitism, basic concept of host parasite relationship, the types of host parasite communications, that is symbiosis, communalism, mutualism, sorry, commensalism, not communalism. That's very
controversial topic. Sorry, it is commensalism, not communalism. So this is the commensalism, mutualism. Then types of parasites. There are on the various bases the parasites have been divided. Their mode of infection, their mode of transmission, their mode of residing, exo, endo, meso, semi, obligatory, facultative, ये parasites हैं. तो यूजुअली एक एक पर तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव ही आ सकता है. टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स पे ऑलवेज यू कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन. देन आर द पैरासिटिक स्ट्रैटेजीज. यूजुअली 6 पैरासिटिक स्ट्रैटेजी माने जाते हैं. पैरासिटिक कास्ट्रेशन, transmission parasites, vector transmitted parasite, tropically transmitted parasites, directly transmitted parasites. Then one new term I have got, parasitism. That is sooner or later the parasite is going to kill the host. Then micropredation, that is more than one host can be infected, that acting as vector. बहुत बार बहुत कम parasitic effects दिखाई देते हैं host में. That is the micropredation. So these, then the types of parasites हो गया. Then another type of small questions you can expect is the kleptoparasitism, brood parasitism, social parasitism, hyperparasitism. So these are certain generalized short questions on the parasites and parasitism, the first subtopic of Unit 1. Then the second topic is the very important topic, that is the molecular interaction between host and parasite and evasion of immunity. इम्यूनिटी को किस तरह पैरासाइट्स इवेड करते हैं, उनको इन्वेड करते हैं, उनको इम्यून सिस्टम को किस तरह पैरासाइट्स किल करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कैंसर. तो उस पे कई तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. किसी एक पर्टिकुलर डिजीज जैसे कैंसर हो गया, किस तरह से एक एग्जांपल के साथ यू मे बी आस्क्ड टू डिस्कस हाउ they have affected the immunity of the host. That molecular parasite के लिए sciencedirect.com पे बहुत अच्छा, और nature.com पे you can get good notes. Then in the short questions in this chapter, in this subtopic, is the evasion of immunity. Then the molecular interaction between host and parasite itself may be a very important topic of short question. Evasion of immunity एक short question आ सकता है. Molecular interaction between host and parasite पे एक short question आ सकता है. With examples आ सकता है. कोई एक particular disease में किस तरह से molecular level पे cell structure और cell biology को affect करते हैं parasites, उस पे question आ सकते हैं. Then are the definite parasites. Protozoan, 2 classes you are having in your syllabus. Protozoan parasites, which the 2 names have been categorized over here. Entamoeba histolytica, जो amoebosis के लिए responsible है, and Leishmania donovani, that is Leishmaniasis. It is responsible for Leishmaniasis. So the syllabus has been made easy for you by giving these particular 2 parasites. But before that, you are having a generalized topic, protozoan parasites. So you can always expect the short questions of habit and habitat of protozoan parasites, structure and life cycle of any protozoan parasite. Of course, here when the names have been mentioned, so it is most expected कि ज़्यादा इस पे ही आएगा, Entamoeba histolytica and Leishmania donovani. One more thing I'd like to mention कि अगर किसी parasite के बारे में particular questions आते हैं, तो उसके 3 parts हो सकते हैं. That is the pathology, what disease it is causing, what are the symptoms of the that disease, what are the causes of that disease, what is the mode of transmission, mode of infection, parasitism, the parasites are monogenetic or digenetic,
एक होस्ट है कि एक से ज्यादा होस्ट हैं, दैट इज द डायगेनेटिक. सो ऑल दीज you can always expect such short questions. Then the treatment, पैथोजेनिसिटी जब भी आप डिस्कस करते हैं, पैथोजेनिसिटी डिस्कस करिए किसी भी पैरासाइट का. सो थ्री important aspects in short questions are the habit and habitat and distribution, then the life cycle also you can expect. And again I have told you, life cycle अगर 5 नंबर के लिए आता है तो आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि डायग्राम और लेबल करके आंसर कीजिए. या कोई पर्टिकुलर स्टेज आता है, जैसे इसमें अच्छा वो हेलमेंट्स में हम देखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेज लार्वल स्टेजेस प्रोटोजोन पैरासाइट्स में नहीं है. बट पैरासिटिज्म हम जब देख रहे हैं तो वी कैन डिस्कस ओवर हियर ही ऑल्सो दैट वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो फाइलेरियल पैरासाइट है उसका माइक्रोफाइलेरी, सिर्फ माइक्रोफाइलेरी एक लार्वल फॉर्म. इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज टोल्ड टू बी द लार्वल फॉर्म, बट इट इज वेरी मच रिजेंबलिंग द एडल्ट पैरासाइट. सो एक माइक्रोफाइलेरी पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन सिम्टम, एनी डिजीज, सिम्टम्स, treatment, diagnosis, pathogenicity. These are the terms on which short questions for any particular parasite you can get. In general, short questions you can get. Then the transmission, pathogenicity, symptom, diagnosis, treatment of the particular parasites. अब एक डिजीज ही, व्हाट इज मे बी डायरिया और डायरियासिस, that is caused by the entamoeba histolytica, like leishmaniasis. This is the disease caused by Leishmania donovani. So these are the forms of protozoan parasite, their questions. Then Helminth's parasites, you can get the diseases. Again here the pathogenicity, Echinococcus granulosus. अच्छा बीच में यहाँ गैप होना चाहिए था. Then Cystosoma hematobium, ये बिल्कुल species and generic name isolate नहीं किया हुआ है, separate नहीं किया हुआ है. It will be Echinococcus granulosus, Cystosoma hematobium. These are the parasites. Echinococcus granulosus is the commonly called as dog tapeworm. It is a digenetic parasite found in dog and intermediate hosts, which may be sometimes it is human, but mostly the intermediate host is cattle. Then Cystosoma hematobium is a blood fluke. It is a trematode that causes the disease cystosomiasis. It may be urinary, it may be intestinal. So इस disease पे again question may be asked, short question. Cystic Echinococcus granulosus, the disease caused is cystic echinococcosis. So like this, the disease you can get. Then you have to, if you are getting the question on the particular disease, then you have to write down about the symptoms, diagnosis, and treatment. That includes the pathogenicity. Then are the larval forms, as it is mentioned over here. In helminth parasite, there are larval forms of platyhelminths and nemathelminths. So we have already seen एक example मैंने आपको बताया कि nemathelminths में nemathelminth includes the nematoda, that is the Ascaris and Wuchereria. Their life cycles, their particular larval forms you can get question. Then platyhelminths में तो बहुत सारे larval forms होते हैं liver fluke के, like the Miracidium larva, Cysticercus larva. So you can always expect short questions on a particular larval form of liver fluke. So this is the general short questions you can expect from the unit 1, that is the parasitology. And then the unit 2 is animal behavior. Animal behavior, you all know,
बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे तो बहुत बहुत तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. Some of the short questions I am giving you here. So it starts with ethology. Ethology is the science of learning animal behavior. Ethos is the behavior and logos is the science. So study of science behavior is the ethology. इस पे आप एक टॉप शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हैं. Then another type of short questions expected are types of behavior. अच्छा, एनिमल बिहेवियर के लिए आप जो साइट्स कंसल्ट कर सकती हैं, आई हैव गॉट 3 ब्रिलियंट साइट्स. इस पर आपको तो हर टॉपिक पे मिल जाएगा. ब्रिटानिका, विकीपीडिया एंड रिसर्च के, इन 3 साइट्स पे यू कैन गेट न्यूमरस टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को ऑलवेज यू कैन एक्सपेक्ट एट the subtopics rather, which you can expect for the short notes, and very important those are. Some of the important short questions are types of behavior, learned behavior, innate behavior, that you know. Then the patterns of behavior, FAP, fixed action pattern, special short question बहुत important है. IRM, that is innate releasing mechanism, very important for short question. Then science stimulus, evolution of behavior, imprinting, learning, ecolation. ये इकोलेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. देन लैंग्वेज ऑफ हनी बी, हाउ द हनी बीज they produce sound and what that means. Then another important topic is the bee dance. बी डांस, आई डोंट नो, सोशल बिहेवियर में इट मस्ट बी इंक्लूडेड. बी डांस से किस तरह हनी बी अट्रैक्ट करती है, और न्यूक्शियल फ्लाइट, बी डांस और न्यूक्शियल फ्लाइट, और द लैंग्वेज ऑफ हनी बी. ये तीनों पे आप शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हैं, या कर सकते हैं, सॉरी. देन इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जितने भी आपने पढ़े हैं उन सब पे, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक और द बायोलॉजिकल रिदम आर वेरी similar terms. The biological rhythms, you can expect always the significance of biological rhythms. Then circadian, circannual, circadian, lunar, circazygostic clocks. With examples में, with examples से ही short questions आ सकते हैं. Then orientation in animals, kinesis, type of kinesis, taxis, type of kinesis, taxis. You can expect short questions on these topics always. Then social behavior में, social behavior of insects जो last topic है आपका. So you know, insects में 2 important insects हैं जो social behavior largely they show: honey bees and wasps and ants. Of course, termites are also the social insects. So you can, but that is exactly that comes under the order Isoptera. So termites also you can expect, of course this is an order. So honeybee, wasps and termites are the social insects. तो उनके कास्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उनकी फर्टिलिटी. हनी बी का तो एक एक कास्ट वर्कर्स अपने आप में ही एक फुल क्वेश्चन नहीं तो नहीं, बट हाँ शॉर्ट क्वेश्चन. वर्कर्स ऑफ हनी बी में मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, स्टेराइल मेल्स एंड स्टेराइल फीमेल्स, स्टेराइल मेल्स. व्हाट दीज वर्कर्स, व्हाट दे डू, व्हाट आर देयर वर्क्स. सो is an important aspect for the short questions. So with this ends today's topic, that is the short questions. Mainly my students have requested to discuss, and so far I can think of short questions for 4 or 5 marks. I have almost presented all possible questions, almost I think so. So thank you so much. Do like, share and subscribe if you like to do so. If you don't like to do so, give me the suggestions.
and to grow the channel. For your support. I also looking for the topics you want to be discussed on this channel. Do comment in chat box. Press the bell icon to get notifications for the next topic, which is most probably will be the same topic for paper 4 as requested by my students. So thank you, students. Thank you so much.